I'm here at the KanaI Infra Property Expo 24 at Geo Convention Center BKC. आज जैसे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नज़र गई इस स्टॉल पे, जो बहुत सुंदर तरीके से एक एस्थेटिक स्टॉल है। तो मैं रुका और मैंने सोचा क्यों नहीं बात किए जाए जो ये एग्जिबिटर यहाँ पे है, जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से स्टॉल बनाया। तो मुझे लगा कि इनकी सोच भी सुंदर होगी और जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं हमेशा डेफिनेटली वो भी सुंदर होगा और डिफरेंट होगा। सुंदर तो हम सब बनाते हैं, कितना डिफरेंट बनाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं जय पुंजानी जय। एक तो मुझे आपका ये नाम बहुत सुंदर लगा। तो कन्हैया, हाउ डू यू प्रोनाउंस एग्जैक्टली? इट्स KanaI Infra। सो KanaI तो मुझे अब एहसास ही हो रहा है कि श्री कृष्ण का ही नाम से आप इंस्पायर्ड है। हाँ जी। सो नेम KanaI इज इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड कृष्णा एंड इट सो हैपेंड दैट वी नेम्ड वन ऑफ आवर चिल्ड्रन KanaI एंड उधर से लोग एक्चुअली अपना बेटे के नाम से कंपनी खोलते हैं। हम लोग ने बेटे के नाम से कंपनी खोल उल्टा कर दिया। अगर हम इसके बारे में बात करें तो पुराने ज़माने में ये अभी हमारी संस्कृति चेंज होती जा रही है। हम कुछ भी नाम रखते हैं, पहले हम नाम भगवान का ही रखते थे, क्योंकि फिर आप दिन में जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो आप बच्चों का ही नाम से पुकारते थे, तो आप कहीं ना कहीं भगवान को तो गोपाल, गोविंद, शिव यही नाम थे। आजकल थोड़े नाम टेढ़े मेढ़े हो गए, एक अक्षर दो अक्षर के हो गए। तो ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। और जब आपके ही जो जनरेशन है, जो आपका जो बच्चा है, जो आपका परिवार है, उसी के नाम से अगर आपने कंपनी बनाई है तो कहीं ना कहीं एक हाई वैल्यूज़ और एथिक्स भी होता है, क्योंकि आपका नाम कंपनी का जुड़ा हुआ है आपके बच्चे से। और कोई भी पेरेंट के लिए जो बच्चा होता है वो सबसे प्यारा होता है। यस। तो इसी बात पर कंटिन्यू करते हैं। आपका प्रोजेक्ट आपने बताया कि खंडाला में है। तो क्या है आपके प्रोजेक्ट में यूनिकनेस और क्यों आपने चुना खंडाला, और क्या सोच है जो आप इतना ज़बरदस्त और सुंदर प्रोजेक्ट बना रहे हैं? सो वी स्टार्टेड ऑफ विद बिल्डिंग सेकंड होम्स एंड हमारी सोच ये थी कि हम लोग वो घर बनाएं जो अभी मार्केट में नहीं मिल सकते हैं। हम लोग ये घर बना रहे हैं एज इफ हम लोग अपने लिए बना रहे हैं, हम लोग अपने लिए बना रहे हैं रहने के लिए। हम लोग वो सोच लेके ये कमर्शियल वेंचर चालू की है। सो इट्स नॉट अ कमर्शियल माइंड। हम लोग के जो घर है, ईच विला इज़ डिफरेंट to another villa. So it's a bespoke kind of villa? It's a bespoke villa. No two villas are same. And the thought process of designing these villas is that, we wanted to need these homes to be in harmony with the nature. So we are actually trying to bring the outdoors into the house. We believe in Vastu, so all our homes are Vastu compliant. And the ethos of these homes are that we try and get very good energy in the house. Wow. And आप अभी आएंगे, ये मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, मैं तो जितने भी लोग आते हैं वो बताते हैं कि आपके घर में जो एनर्जी नहीं, आपके हमारे कॉमन मित्र है कमल, उन्होंने बहुत तारीफ़ करी, तो मैं ज़रूर आऊँगा। और मेरा जो ये जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, यही मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि जितने भी यूनिक प्रोजेक्ट्स है हम जाके मिले और वो प्रोजेक्ट को देखें। तो नॉट ओनली दैट वी आर कवरिंग दिस इवेंट फॉर KanaI Infra फ्रॉम द प्रॉपर्टी एक्सपो पर्सपेक्टिव, बट वी वुड वांट टू कम एंड विजिट द प्रोजेक्ट। तो क्या है, सीइंग इज बिलीविंग। हाँ जी। तो कंटिन्यू द डिस्कशन, जैसे आपने बताया, तो आपका जो TG है, आप 8,000 स्क्वायर फीट से लेके So we start at 8,000 square feet onwards, go up to 15,000-16,000. 15,000, तो 15,000 स्क्वायर फीट का आप एक विला बना रहे हैं। हाँ जी। खंडाला में बना रहे हैं, bespoke बना रहे हैं, उसको एक कमर्शियल वेंचर नहीं समझकर, जिसका मतलब ये है कि उसमें बहुत सोच जाती है। हाँ जी। बहुत उसमें आपका पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। कुछ भी चीज़ आप अगर बनाते हैं जो इट इज़ लाइक अ फैक्ट्री ऑपरेशन, इज मच चीपर। तो ये प्रोडक्ट बनाते बनाते भी एक्सपेंसिव पड़ता होगा। हाँ जी। तो कैसा आप इसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, इसकी पोजीशनिंग कैसे कर रहे हैं, और इसकी सेल्स कैसे कर रहे हैं? हाँ, तो पहले तो हम लोग थोड़ा मार्केटिंग और सेल्स के पहले डिज़ाइन बोलूँगा। तो हम लोग के जितने भी घर है, ऑल ऑफ देम आर विदाउट एन एक्सपोज बीम। दे आर कॉलमलेस होम्स, 0 exposed column, 0 exposed beam. All you will not see a single beam or a column in our entire house.
मतलब आप 8,000, 10,000, 11,000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं हाँ जी, और खंडाला में बना रहे हैं, जो वैसे भी मेरे हिसाब से चैलेंजिंग हुआ। Yes. क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और जो आपको कॉन्ट्रैक्टर या जो भी लगता होगा, इट्स नॉट दैट इजी एज कम्पेयर टू द अवेलेबिलिटी इन अ प्लेस लाइक मुंबई। हाँ जी। तो वो एक ऑलरेडी आप एक चैलेंज के साथ कर रहे हैं। Yes, because we believe that, you know, when we are giving these kind of spaces which do not have an exposed beam or an exposed column, the living room feel is vast. वाओ, You know, we have a house which you see over there. The living room area is 4,000 carpet without a single beam. तो डिजाइन पे आपने पहले बोला कि आपने बहुत ध्यान रखा। Yes. So actually हम लोग का डिज़ाइन ही हम लोग का मार्केटिंग है. The way we are designing these villas, my bedroom, the master bedroom is 2,000 carpet. The bathroom is 480 carpet. Is a his and her concept. Probably one of the first few people in India to bring in this concept. वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप ये सोच कहाँ से शुरू हुई? यू नो, एवरी डेवलपर, एवरी एंटरप्रेन्योर, एवरी बिजनेसमैन, वो जब कुछ चीज़ नया करता है, जब इनोवेटिव करता है, तो या तो एक मार्केट को डिस्टर्ब करता है, या एक मार्केट में कोई गैप है उसकी, वो गैप को पूरे करता है। तो ये आपकी सोच कैसे आई? आपने खंडाला चुना, आपने ये 8,000, 10,000 चुना, आपने डिज़ाइन के ऊपर फोकस किया। इट इज़ नॉट ईजी, राइट? Yes. बिकॉज you know, I've been in this business for more than 3 decades. Unfortunately, we don't really do the right comparison. तो अगर आपका एक पर स्क्वायर फीट का रेट अलग है, मतलब एक पर्टिकुलर रेट है, और बाजू में कोई दूसरा डेवलपर है, वो थोड़ा उतना मेहनत नहीं कर रहा जितना आप कर रहे हैं, डिज़ाइन पे इतना फोकस नहीं है, एस्थेटिक पे इतना फोकस नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं है, तो पर स्क्वायर फीट रेट उसका कम होगा जरूर। तो ये चैलेंज आप समझते हैं कि आपने इस चैलेंज को ऑलरेडी आपने बेसिकली आपके डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के वजह से आपने ओवरकम कर लिया है। हाँ जी। एंड द सेकंड थिंग, दैट इज़ वन एस्पेक्ट। द सेकंड थिंग इज़ दैट हम लोग के जो साइज़ है, घर के साइज़ है, एंड द स्केल ऑफ द विलास इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट कमर्शियल टुडे. So we have probably got ourselves in a segment which does not exist. तो आपने एक रिसर्च किया, ये हो गया? नहीं, we believe that there was a gap in the market. There are people with a lot of money in their pockets, but I looked at the time value of money. अगर एक आदमी जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अगर उसको 3 साल इन्वेस्ट करने उसके घर में, बिकॉज उसको वो क्वालिटी का घर कमर्शियली नहीं मिल रहा है. This is where we come in and bridging that gap, and we are delivering these houses where that guy would build a house with the same passion and the same integrity. We are doing that on their behalf. Understood. Amazing. So you are not, I would say you are a very boutique developer. We are a boutique developer. और a very passionate developer. Yes, we are. पहली बार आपसे मिल रहा हूँ तो बात करने से मालूम पड़ रहा है वो एक टिपिकल डेवलपर माइंडसेट नहीं है. और कितने साल हुए आपको? So we started this venture in 2020 in the pandemic. During the pandemic or post pandemic? The idea was born before the pandemic, and we executed this during the pandemic, and we started the company in 2020. Wow. So KanaI Infra was incorporated with the Krishna Bhagwan ka mukut on the logo on top in 2020. Very interesting. बहुत अच्छा लग रहा है. अब मेरे को एक सवाल बताइए कि सेकंड होम्स के ऊपर आज बहुत चर्चा हो रहा है. हाँ जी. और बहुत सारे सेकंड होम डेस्टिनेशन बन रहे हैं, और पेंडेमिक के बाद बहुत सारे UHNI और HNI जो है उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं. Yes. आप दुबई में घर ले सकते हो, सेकंड होम की बात कर रहे हैं तो आप अलीबाग ले सकते हो, आप गोवा में ले सकते हो. हाँ जी. तो वाई खंडाला? So we believe that your second home should be under 2 hours distance from your primary home or residence. Then you will be fully able to exploit your second home. आज मैं 5:30 बजे ऑफिस से निकल के 7-7:30 बजे तक मैं घर पहुंच सकता हूँ शाम को. बॉम्बे में 1-1.5 घंटे का ट्रैवल टाइम लगता ही है कहीं से भी पहुंचने के लिए. सो द मिनट यू क्रॉस द 2 hours थ्रेशोल्ड, देन योर सेकेंड होम समटाइम्स इज नॉट पॉसिबल टू गो एवरी वीकेंड. तो मेरे चेहरे पे इसलिए स्माइल आ रही है क्योंकि मैंने देखा है ये ट्रेंड, क्योंकि हम 5-6 साल से काफ़ी रियल एस्टेट के ट्रेंड्स को हम फॉलो करते हैं, हम उसको इवेल्युएट करते हैं. तो हंसी इस बात की लिए इसलिए आ रही है कि अब उल्टा हो गया है. पहले बॉम्बे कर जो था वो मंडे टू फ्राइडे बॉम्बे रहता था. हाँ जी. और वीकेंड पे वो हॉलीडे हो जाता था. करेक्ट. अब थोड़ा उल्टा हो गया है, हम मंडे टू फ्राइडे खंडाला में काम करते हैं और वीकेंड में पार्टी करने के लिए बॉम्बे. मैं वैसे ही करता तो हूँ. आपका भी यही हो रहा है? मैं वैसे ही हो रहा है. तो आप कहाँ के? आप मुंबई के? हम बॉम्बे के भी और खंडाला के भी है. एंड वीक डेज आई एम इन खंडाला एंड वीकेंड्स आई एम इन बॉम्बे. तो यू आर पार्टिंग इन बॉम्बे. आई एम पार्टिंग इन बॉम्बे एंड लिविंग
enjoying and living a very good life with a very clean air in very good AQI in Khandala. जय आपने डिज़ाइन के बारे में बात किया, हाँ ठीक है, तो डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा आप एम्फेसिस करें कि व्हाट आर द एलिमेंट्स, व्हाट इज दैट गोज इनटू डिज़ाइन. डिज़ाइन अगेन इज अ वेरी वेरी ब्रॉड वर्ड, राइट? तो उसमें इंटीरियर भी आ गया, आर्किटेक्चर भी आ गया, तो क्या, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव व्हेन यू टॉक अबाउट डिज़ाइन? So when we talk about design, first I would look at the architecture, because your bones and veins of the house cannot be changed once it's built. So we focus a lot on the structure and the architecture. The interior designing, if I call it the decoration of the face or decoration of the house, I can change every 2-3 years. Again, in Khandala, we need to be very aware of what products we can use, because we have a very harsh sunlight in March, April and May. The rainfall is very high. We have heavy moisture content for 3 to 4 months in a year. So we have to choose material which is bellwether, which will sustain through all the weathers. So again, design has to factor in what components of material we use. ये बहुत important है, right? Very important. So I cannot just use any kind of material which we use in Bombay. It will not sustain in Khandala. Second thing, as far as a boutique home is concerned, we have even made a home in Khandala without a TV, and it's turned out beautiful. Without Without a TV or any electronics. We've just built around stones and in earthen. back to nature. Back to nature. And completely cut off from the so-called digital world. Yes. So basically, design is also a very personal thing. We want your personality to reflect in your home. So your soul has to be there in your house. So the design is also a function of the person. So we also design the homes around the personality. So how do you do it? Again, how can you give us the process? No, आपका plot है, तो मैं पहले आप ready-made नहीं बनाते, आप मेरे. So we made ready-made villas also, and a lot of people buy the ready-made villas, and we are happy to customize the villas, because we are looking at a segment which is for a certain section of people. They want the interiors to be aligned to their taste. Not only the interior, जो जैसे आपने बताया कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास सेकंड होम, उसने कुछ कहीं स्विट्जरलैंड गया होगा या यूके गया होगा, उसने कोई घर देखा होगा, तो जब वो आपके साथ बैठते हैं और उनके पास टाइम नहीं है, तो वो आपको बोलते हैं कि चलिए आप ही हमको बनाएं. तो डू यू स्पेंड टाइम विद द क्लाइंट, विद द प्रोस्पेक्टिव बायर? Absolutely. उसको क्या चाहिए और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फिर विला डिज़ाइन करके बनाते हैं? Absolutely. So what we do is the interiors of the house we can customize, but the architecture is not really customized from first, because we know what works in Khandala. For example, in all our homes we have double beams. So my outer periphery beam has a double beam which protects my main structure. Wow. Okay, so a lot of the architectural elements are done by us. We customize the interiors for the customer. तो कितने, अभी आपने कहा 2020 में आपने ये कंपनी बनाई, आज हम 2024 में हैं. आई नो आपको पेंडेमिक के चैलेंजेस हुए होंगे, तो कीपिंग इन दैट माइंड कितने विलास आपने तो डिलीवर कर? We have delivered 8 projects, 8 villas till now. 8 villas. 8 villas. And they're all in the same property or they're all in the same area. So और कितने विलास आपके आ रहे हैं? अभी हम लोग के काफ़ी आ रहे हैं. We are launching 2 more projects in the next quarter, and then we are coming up with another gated community of 11 villas. So all Khandala? Everything is Khandala. So you are taking the ownership of Khandala as a developer, as a community builder, because 8,000, 10,000, 12,000 एक अलग community आप बना रहे हैं. हाँ जी. Any, with all due respect, if possible, any influential or any celebrity buyer, if you feel you can give the name? So one of the owners of Sun Pharma has recently bought one of our villas. So from the Dilip Sanghvi's family? हाँ जी, उनके जो पार्टनर है. उनके पार्टनर ने. हाँ जी. वेरी नाइस. और क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हैं? डिज़ाइन के बारे में मैंने समझ लिया, आपकी जो एक बिलीफ है आपके ब्रांड में, वो समझ में आ गया. और आज ये मेरे ख्याल से जो नया दौर है और जो नए डेवलपर आ रहे हैं, द न्यू जनरेशन डेवलपर हु आर जॉइनिंग दिस इंडस्ट्री, दे कमिंग विद अ लॉट ऑफ research, and they were very different in terms of their application, unlike the developers of the earlier generation. So can you just give us some more perspective in terms of your... So we believe in word of mouth marketing. We let our product talk and our design talk.
because we are not using any traditional mediums of marketing or advertising till now. And we believe that, let the customer come on site and see what we are doing. I think that is my marketing. एंड आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ शुरू हो जाता है. आप इतना यूनिक जब आप एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आई एम श्योर वो आपकी अपने आप मार्केटिंग हो जाती है. आपका एक बंगलो विला 8,000 10,000 का रफली बनाने के बाद कितने का कॉस्ट पड़ता है? So we started about 14 crores onwards, go right up to 40 crores. So from a 14 crores to a 40 crore, you have a bespoke villa in Khandala. I think that is something amazing. 40 करोड़ का घर आप बना रहे हैं खंडाला में, तो आई डोंट नो अभी वो सेकंड होम होगा या वो प्राइमरी होम बन जाएगा, मुझे नहीं पता है. It is designed to be a parallel first home. With all the bells and whistles of the Bombay home, probably more. It is more bespoke than your first home. We make the second homes so grand that it pulls you to that home. I believe you because I think होने वाला है. जिस तरह बॉम्बे एक शहर जो है, जो हमारा MMR है, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वी आर ऑल गेटिंग इंटरकनेक्टेड नाउ. तो बॉम्बे वॉज अ वेरी लीनियर सिटी, एकदम स्ट्रेट सिटी थी. अब बहुत सारे बाईपासेस और इंफ्रा डेवलपमेंट की वजह से कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ रही है. और शायद खंडाला इज गोइंग टू बी वेरी सून an extension of Mumbai जैसा. It will be. If you look at the distance from the new Navi Mumbai airport to Khandala, Khandala is closer to the Navi Mumbai airport than most parts of Bombay. There you go. With this perspective, capital appreciation possibility in your project? Yes. I'm not talking from an investor point of view, but do you think that there is an Absolutely, because a one-up kind of a perspective, in terms of your price? the pricing and the value of your property is going to increase substantially in Khandala, because Khandala is a green zone. Most of the areas of Khandala are no development zones. There are very, very few, almost no land parcel available today. Whatever, That's one thing. And we are developing these villas in the most super premium area of Khandala. What Altamount Road is to Mumbai is what our area is to Khandala. So that means your land acquisition also there's a lot of thought. Yes. ऐसा नहीं कि मुझे ये लैंड मिल गया आपने लैंड ले लिया. नहीं. उसमें भी आपकी सोच है. We are in the most super premium area of Lonavala Khandala, and the most high-end individuals and most HNIs or UHNIs of India Inc. are residing in that area today. So we तो आप अल्टामाउंट बना रहे हैं मुंबई का अल्टामाउंट खंडाला में? हम बना नहीं रहे हैं, बन गया है. बन गया है एंड एनहांस कर रहे हैं. तो मुकेश अंबानी का चांस अभी तो खैर आपने सन फार्मा का पार्टनर बोल ही दिया है. तो सन फार्मा इज द 8th richest UHNI of the country anyway, and I think this is what the new India is all about. Yes, we have New wealth has been created. It is. And aspiration value हो गई है. हो गई है. And the area, most of all the bigwigs of India Inc. are next door neighbor to Asian Paints. We have Glenmark Pharmaceuticals, Patni Computers, Sher Khan, Anand Jain, Reliance के Mukesh Ambani के partner, the Godrej family, Jatias. So they all are saying all of them are in this area, in the same vicinity. Great. What is your thought for perspective of 2024? From Khandala, from real estate, from boutique, luxury perspective. I believe overall your thoughts on 2024 for the Indian real estate, or Mumbai real estate, whatever you want to call it. Disposable income is increasing. The wealth is increasing by leaps and bounds. Thank you to the stock market. And with this, people are consuming their homes in a different way. Earlier, people were not consuming their homes or their second homes. Now, there is a change in the mindset, especially in the younger people, that, we want to enjoy life, enjoy our homes. Sir, younger people मत बोलो sir. Everybody. We are 60 plus. Everybody. I mean, I have 60 plus. So 60 is young. 60 is as young as... I also want to enjoy, right? Yes, absolutely. So why should only the youth enjoy? Yes. So there is a definite change in the way people are consuming homes and their second homes. And these second homes are becoming parallel first homes. Yeah. Because thank you to the pandemic, working from home is an option. People are coming here, working for a couple of days a week. Especially the top level management people are saying,
that, why should I go to office? My CEOs and CFOs will come and meet me in my house. That is what we are seeing. Yeah, I'm believing in that. I think the way businesses are being executed, conducted is also changing now. Yes. Or I think there's a lot of businesses being now decontrolled and decentralized. Yes. So you are empowering and enabling the second layer of your business, the leadership team, to take decisions. Yes. So that you really can enjoy the luxury of staying in a place like Khandala. Absolutely. And actually, though it's a second home, but you can convert that into a primary home. It is. Like, some of the names I've mentioned over here, many of them are staying here for extended periods of time. Yes. And we see that even the way we are consuming our home, we get people to our home and we have office spaces in our home and we conduct our work from an office environment. I am really amazed. And this expo has been an eye-opener for me. Today, the first day, I have had the opportunity to meet developers from not just from Mumbai. We just met a developer from Surat. Yes. And I think this is what the India growth story is all about. Tier 2 cities outside Mumbai, locations outside Mumbai, all are growing. The India growth story will continue. We're looking at very strong political, support right now. The economic growth is happening. Your final comments on the future of real estate 2024? I think the real estate industry in India, specifically to Bombay and MMR region, is having a very strong growth trajectory, at least for the next 1 decade. We see luxury homes, mid-level homes, and these demands are going to Do you think shock most people. You Demand for these homes will shock most people. थोड़ा लगता है कि ये कहीं जाके it's a bubble तो नहीं है. See, we are on a growth trajectory. We will oscillate, okay? But the curve is going up. Curve is going up. Yeah, we could oscillate over a period of time. थोड़ा होगा. Supply demand. होगा, वो तो होना ही है. कुछ और हो गया, कुछ बहुत सारे circumstances जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. हो सकता है. Pandemic आ गया बीच में. Interest rates आ सकता है high. Interest rate आ सकता है. Whatever, but the curve is high. Curve is high. Yes. So wonderful talking to you. Lovely talk. And look forward of visiting your villas. Yes. And I don't think I will be able to afford to buy one, but we are building a community, and God willing, we'll do some transaction with you. Done. So I'd love to visit you, and I'm really thrilled. I'm looking forward, and very happy to meet you. Pleasure talking. Learn about the thought and the belief which you have in the name, in the product, in the location which you're building, and super excited and wishing you all the best. You have 2 more days, and may you have a wonderful, successful exhibition here at KanaI Infra. Thank you very much. Thank you. Pleasure talking to you.